Hello students, topic petty cash book. We are going to solve practical problem from page number 174, problem number 5th. Question is given, from the following information, prepare columnar petty cash book kept on impress system in the books of Manisha Books Stall, Bede. So we have to prepare columnar petty cash book, that is analytical petty cash book kept on impress system. Now impress system means the amount which is spent by the petty cashier for a month, that same amount will be received by him from the main cashier. Year दिया है 2018 April 1st. Opening petty cash balance amount is given 200. तो petty cash का balance दिया है. Cash is a real account. तो इसका balance हमें record करना है on the receipt side, that is amount received का column में record करना है. और record करते समय we have to write down to balance brought down. Date second is given, received a bearer check to make up the impressed amount rupees 1200. Previous month में petty cashier ने 1200 rupees spent किया था. That same amount is received by him to make up the impressed amount. Now since यहाँ पर bearer check is received, entry pass करते समय we have to write down to cash account और amount को record करना है in amount received column. Date third, gave a tips to peon rupees 40. So tips को record करना है in miscellaneous expenses column. Date 4, purchased stationery amount is 150. इसे हमें record करना है in printing and stationery column. Date 5, paid taxi fare amount 35. We have to record in traveling and conveyance column. Date 6, purchased stamp pad amount is 140. Stamp pad will come in printing and stationery column. Date 7, paid cartage amount 40. It will come in carriage and cartage column. Date 8, paid bus fare amount is 30. बस फेयर को रिकॉर्ड करना है इन ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कॉलम. डेट 11, पेड टू स्वीपर अमाउंट इज 50. स्वीपर को अमाउंट पे किया है तो वी हैव टू रिकॉर्ड इन मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम. डेट 13, परचेज्ड अ बॉक्स of pencils amount is 40. Pencil box will be recorded in printing and stationery column. Date 14, paid mobile charges rupees 35. इसे record करना है in telephone expense column. Date 15, gave to Sohan on account amount is 250. So amount is paid to a person. इसे record करना है in ledger account column. Date 19, paid for refreshment to staff amount is 150. Refreshment को record करना है in miscellaneous expense column. Date 20,
paid railway fare amount is 30. It will come in traveling and conveyance column. And last, date 21st, paid carriage amount is 65. इसे रिकॉर्ड करना है in carriage and cartage column. Now we have to prepare the columns for columnar petty cash book. Total 7 columns are fixed. ऊपर हमें हेडिंग लिखना है columnar petty cash book. ब्रैकेट में हमें लिखना है impressed system. The first column is amount received, then date, particulars, V number and amount paid. Second last column is LF और सबसे लास्ट कॉलम है लेडजर अकाउंट. नाउ बिटवीन अमाउंट पेड कॉलम एंड LF कॉलम हमें 6 एक्सपेंसेस का कॉलम्स ड्रॉ करना है. द फर्स्ट कॉलम हमें ड्रॉ करना है फॉर पोस्टेज एंड कुरियर, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, carriage and cartage and miscellaneous expenses. अभी हमें एंट्रीज पास करना है इन कॉलमनर पेटी कैश बुक. ईयर आएगा 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 200 हमें रिकॉर्ड करना है इन अमाउंट रिसीव्ड कॉलम. डेट सेकेंड इज गिवन, रिसीव्ड अ बेयरर चेक. Now whenever a bearer check is received तो हमें to cash account record करना है. So date will come second to cash account, and since a bearer check is received तो amount को record करना है in amount received column. Date third, gave a tips to peon. सो हमें लिखना है बाय टिप्स टू प्यून. अमाउंट 40 हमें अमाउंट पेड का कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड टिप्स विल कम इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम. डेट 4, परचेज स्टेशनरी. सो इट विल कम बाय स्टेशनरी. स्टेशनरी को रिकॉर्ड करना है इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम. डेट 5, पेड टैक्सी फेयर. सो हमें रिकॉर्ड करना है बाय टैक्सी फेयर और उसे रिकॉर्ड करना है इन ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस कॉलम. डेट 6, बाय स्टैम्प पैड एंड स्टैम्प पैड विल कम इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम. डेट 7, पेड कार्टेज. सो हमें रिकॉर्ड करना है बाय कार्टेज और अमाउंट आएगा इन कैरेज एंड कार्टेज कॉलम. Date 8, paid bus fare. So we have to write down by bus fare. Amount we have to record in traveling and conveyance column. Next, date 11, paid to sweeper. तो हमें लिखना है by sweeping charges, which will be recorded in miscellaneous expenses column. Date 13, परचेज्ड अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स. सो हमें लिखना है बाय बॉक्स ऑफ पेंसिल्स विच विल बी रिकॉर्डेड इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम. नेक्स्ट इज पेड मोबाइल चार्जेस. सो हमें डेट लिखना है 14 बाय मोबाइल चार्जेस एंड अमाउंट विल कम इन टेलीफोन एक्सपेंस कॉलम. डेट 15, गेव टू सोहन. सो हमें लिखना है बाय सोहन एंड सिंस अमाउंट इज पेड टू अ पर्सन उसे रिकॉर्ड करना है इन लेडजर अकाउंट कॉलम. डेट 19, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ. सो इट विल कम बाय रिफ्रेशमेंट और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम. Date 20, paid railway fare. So it will come by railway fare. उसे रिकॉर्ड करना है इन ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस कॉलम. एंड लास्ट, डेट 21st, पेड कैरेज. सो हमें रिकॉर्ड करना है बाय कैरेज
और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैरेज एंड कार्टेज कॉलम। सभी एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद अभी हमें सभी एक्सपेंसेस का टोटल करना है। सबसे पहले हम अमाउंट पेड का टोटल करते, इट विल कम 1055। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का टोटल आएगा 330, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 95, टेलीफोन एक्सपेंसेस 35, कैरेज एंड कार्टेज 105, miscellaneous expenses 240, and ledger account will come 250। expenses का सभी टोटल करने के बाद now we have to find out the balance। so below 1055 we have to leave one line, और अभी हमें रिसीप्ट साइड का टोटल करना है। रिसीप्ट साइड टोटल विल ऑलवेज बी हायर, टोटल विल कम 1400, जिसे हमें अमाउंट पेड का कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ अमाउंट रिसीव्ड टोटल इज 1400 एंड अमाउंट पेड टोटल इज 1055। सो हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, सो द बैलेंस विल बी 345। सो इसे हमें रिकॉर्ड करना है बिलो 1055। डेट विल कम अप्रैल का लास्ट डेट लिखना है। सो वी हैव टू राइट डाउन डेट 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट विल कम 345। कैरिड डाउन को हमें ब्रॉट डाउन करना है ऑन द ऑपोजिट साइड। सो 345 we have to record below the total in amount received column. So date will come May 1st to balance brought down। हम ये प्रॉब्लम इम्प्रेस सिस्टम में सॉल्व कर रहे। सो द अमाउंट स्पेंट बाय द पेटी कैशियर इज 1055। दिस अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द पेटी कैशियर। सो हमें मे 1st के बिलो वापस से डेट लिखना है फर्स्ट। वी हैव टू राइट डाउन टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट विल कम 1055। टू कैश अकाउंट इसलिए लिखा है बिकॉज ऑन अप्रैल 2nd वी हैव रिकॉर्डेड टू कैश अकाउंट।